नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश पर। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। चलिए शुरुआत करेंगे बाजार की खबरों के साथ, जहां हमने देखा कि ये लगातार दूसरे दिन आज बाजार में तेजी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लगातार जो है तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और दिन के जो है 2 दिन में करीब 6 से 7% बढ़ चुका है। फार्मा और पावर शेयरों में हमने तेजी देखी। निफ्टी आज दूसरे दिन तेजी के साथ 17,400 के आसपास जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब 850 अंकों से ज्यादा की बढ़त ही देखने को मिली। दिन भर बाजार में कहां पर तेजी थी, कहां सारा एक्शन था, बताने के लिए मेरी सहयोगी मानसी दवे अब जुड़ रही हैं हमारे साथ। बिल्कुल, तो वीकली एक्सपायरी के दिन धुआंधार तेजी देखने को मिली। दिन भर बाजार में अच्छे ट्रेड्स देखने को मिले, मजबूती के साथ कामकाज हमने देखा। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स में भी तेजी ही तेजी छाई रही और क्लोजिंग तक की तेजी जो है वो कायम भी रही। अब निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, हमने देखा रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस जैसे स्टॉक्स इस सूची में शामिल थे, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी बाजार को मिलती हुई दिख रही थी। तो कह सकते कि पुलर्स थे जो कि निफ्टी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। ड्रैगर्स यानी कि लूजर्स की अगर बात करें, कमजोरी कहां पर हावी होती हुई दिखी? भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, सिप्ला, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स हमने also been there in the last decade and which has brought us here. He has written a few very insightful pieces in the last few months just after the pandemic, and some of them actually motivated or inspired us to look at calling him in and to ask him a few questions to get more explanations on those subjects, because they look very, very relevant to our theme of the great Indian democratic dividend. So I'll straight get to the questions. We have half an hour. Professor Rajan, at the beginning of 1990s, most parameters were at par for China and India. India's most forward-looking administration till date at that time kick-started liberalization even as Deng Xiaoping put China on its new path. While the Chinese leadership got an uninterrupted run that led to where they have now reached, P.V. Narasimha Rao failed to get the next term. We saw this again in 2004 when India Shining failed to return the Vajpayee government to office. Is democracy a luxury that large lower-income countries cannot afford? How can we compete and survive when the voters themselves are bottlenecks to infrastructure and productivity? So. Well, first, thanks for having me here. Second, we were at that time maybe 10 years behind China in terms of reforms. China started really late 70s, and we started in a big way early 90s. So there was about a 10, 12-year gap. So that's number one. Two, I think the changes in government in the early years were not a complete abandonment of reforms. If you think of the dream budget that Mr. Chidambaram presented, that was in one of the coalition governments that succeeded Narasimha Rao. And similarly, even though the NDA didn't get its term renewed, we saw that for the first few years of the UPA regime, there was a substantial amount of progress. Growth was strong until the global financial crisis. So it's not as if every new government sort of throws away the reforms that previous governments enacted. There might be a rebalancing. So, for example, the UPA focused much more on redistribution, while the NDA, the first NDA, focused much more on growth. And I think that combination sort of helped and perhaps was necessary democratically speaking. So I would say that the jury is still out on whether that combination of strong growth, focus on redistribution, in some ways was as good, if not better, than what the Chinese did. The Chinese focused primarily on growth, and over time that paid huge dividends, but we tried to take a slightly different path. Thank you. Although, they have been able to take a lot more people out of poverty than we have been able to. Of course, now we have almost caught up there.
Coming back to reforms, you spoke about the timidity of reforms and lack of democratic dialogue in formulating policy in the recent years. Is protest in today's political environment really constructive when groups pick issues not for the merits, but the expediency of putting the other side of balance? All parties, including the one in power, behave the same way while in opposition. Your take on the subject, sir? Look, democracy is not always easy, right? It requires navigation, and clearly that requires a certain amount of dialogue. You hope that in that dialogue you get some course correction, you get some of the edges taken off policy, but that makes the policy more appealing to a larger number of people. Let's face it, I mean, we are in a democracy, we can't wish it away. At the same time, it has a lot of benefits. I mean, if you think about some of the poster children of autocracy today, Russia and China, you can see the consequences of having no checks and balances. Russia has got into a war that many Russians don't agree with, and which is going to set their country back significantly. China, seemed to be successful with its COVID policies, but now it's got stuck because the COVID policies are so clearly associated with President Xi Jinping that they have no ability to back off. Think also about our sort of jhatka decisions that were made, demonetization, or the lack of attention to vaccines. I mean, these are all, areas where perhaps a little more transparency, a little more dialogue might actually have led to better decisions. Demonetization, you can't have a public dialogue about it, but at least within government, perhaps a little more checks and balances might have prevented us from taking that step, which led to large setbacks to the economy. So broadly speaking, I think it's hard to argue that authoritarian decisions taken by a small coterie are necessarily beneficial for the country, and our past suggests they're not. Democracy is good. Is it always good? No. It does slow things down, but that's the price you pay for making better decisions. So reforms by any route, as we discussed, is after all reforms. I'm sure you agree that the farm loss and dismantling of MSP would have eventually improved the productivity of our agriculture sector, which is very, very essential. In spite of that, critical state elections may have played a role in the rollback, which we saw. So would you consider this a positive step as it signals that there is respect for the voter? Look, I think that in the farm laws, there were some good elements, and I've said that repeatedly, but also it was a centralized one-size-fits-all kind of law. And obviously, it impacted different states in different ways. Experts in the agricultural area tell me that it could have been much better tailored, especially if large elements of it had been decentralized to the states to figure out what worked best for them. That said, the MSPs are also something that a lot of farmers have grown to, rely upon. And so you can't threaten to take it away without some adequate substitute. And what was important was a dialogue and shaping what that substitute would look like. When you talk to farmers, they're obviously very concerned about, for example, growing rice in Punjab, which is a water-scarce state. But how do you move from that? That's where the dialogue comes in. And so my sense is that this should not be a signal to abandon reform, but to start talking about how you would implement it in a way that first takes into account the interests of different parties, but then is much more clever about how to, in a sense, formulate it such that it has broader appeal. I'm not saying it's always easy. In fact, it's very difficult, but that's the challenge of governance in a vibrant, raucous democracy like ours. Okay. You've been critical of India.
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी यहाँ पर इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बात करते हुए, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से भारत जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर पॉलिसीज़ को लागू कर पाना कितना मुश्किल काम होता है और इसके लिए डायलॉग की ज़रूरत है। अपने व्यूज़ रखते हुए फार्म लॉज के ऊपर और दूसरे अलग मुद्दों के ऊपर लगातार इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से ऐसी ही बड़ी वॉइसेस आज ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपको सुनवा रहे हैं। लेकिन चलिए अपने शो का रुख करते हैं कल की तैयारी और जानते हैं हमारे दोनों खास मेहमानों से कि कल क्या करना चाहिए आपको। हमारे दो मेहमान रवि सिंह और देवांग शाह हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। देवांग, काफ़ी अच्छा पुल बैक हमने देखा, जो गिरावट 2 दिन पहले देखी थी बाजार ने, 17,000 के नीचे पहुंचे थे हम, अब 17,300 400 के आसपास खड़े हैं। इस पुल बैक को आप कैसे रीड कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि यहाँ से अब अपसाइड शुरू होगा और लंबा जाएगा? ओवरऑल हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर का गिरावट के बाद हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंटैक्ट रह सकती है मार्केट में अभी भी, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स को यहाँ पे देखना चाहिए इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड लेने के लिए। अगर लेवल्स की जहां तक बात करें, इमीडिएट जो निफ्टी का सपोर्ट जोन है 17,200 का नाउ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 17,600 का इमीडिएट नाउ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। ओके, तो वो लेवल्स हैं क्रिटिकल जहां पर फोकस करने की ज़रूरत है बाजार में ट्रेड करने के लिए। रवि, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस समय अर्निंग सीजन चल रहा है, ग्लोबल जो संकेत हैं वो काफ़ी हद तक जो डेवलपमेंट्स है, चाहे वो रशिया यूक्रेन को लेकर हों या ऑयल को लेकर हों, डाइजेस्ट कर लिया है बाजार ने कहीं ना कहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर अब यहाँ से एक नए अपमूव की शुरुआत होनी है तो कौन से नए ट्रिगर्स बाजार इस समय देख रहा है? रवि, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सौमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय जो मार्केट का मूड है वो कहीं ना कहीं से अब जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो इन्फ्लेशन है उससे बाहर निकल गया है। तो अब जो वापस से जो अर्निंग सीजन में जो अभी करेक्शन हो चुके हैं, उन स्टॉक्स में आपको रैली देखने को मिल सकती है। खास तौर से आईटी सेक्टर ने बहुत ही करेक्शन एक लंबा दिखा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रूपी का इम्पैक्ट है वो अब आईटी सेक्टर को यहाँ से ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ है कि जो यूएस के अभी डेटा नजर निकल के देखने को मिलेंगे, उनका एक इम्पैक्ट जो है वो इंडियन मार्केट में रहेगा। और कहीं ना कहीं से अब जो ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं वो ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। मेटल्स के प्राइसेस काफी हाई हैं, कमोडिटी प्राइसेस में इन्फ्लेशन दिख रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड स्टॉक्स में काफी बड़ी रैली अब देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से आपका कॉन्क्लेव चल रहा है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की पूरी तरह से जो है वो चर्चा हो रही है, ग्रोथ डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। तो ये 3 सेक्टर पे मेरा नेक्स्ट फोकस अभी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा। और चूंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या फिर क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो, इन्फ्लेशन, वो काफी हद तक अब जो है वो मार्केट में पचा चुका है उन चीजों को। तो अब आगे की रैली इनके बेसिस पे यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फैक्टर्स हैं जहां पर फोकस रहेगा। और आपने हमारे कॉन्क्लेव की बात की, यहाँ पर बिल्कुल मैं वहीं पर ले जाना चाहता हूं अपने दर्शकों को एक बार फिर। जो इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव चल रहा है वहां पर कई बाजार के दिग्गज शामिल हुए आज और उन्होंने चर्चा में अपने व्यूज़ रखे। फर्स्ट ग्लोबल के को फाउंडर शंकर शर्मा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि HUL, HDFC बैंक जैसे शेयरों में फिलहाल उनकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भारत में निवेश के कई बेहतरीन मौके बरकरार हैं। So far as investing is concerned, I think Madhu, my dear old friend, we were chatting before the show that I don't even know the stock price of Hindustan Lever, HDFC Bank, because I have no interest in those stocks anymore. HDFC Bank is down 20% from its recent peak, yes, but anyway. Yeah, and I think Lever is down the same over a year or so, thereabouts, right? So we were just discussing, at least that's my view, that these are yesterday's trades. The trade has moved on, and in markets the only thing my 30 years of investing has taught me is that you have to keep moving, because no theme is a permanent theme. Themes keep changing, and the theme that now exists in India is really the small cap space. And I have said this publicly that many times, that I don't see the Sensex or the Nifty giving you outsized returns. But on the other hand, if you go, let's say, under the buffet table, okay, leftover, the leftovers of the market, the small caps, I am telling you, I am spoiled for choice. I have more opportunity than I have money. It is insane the amount of companies who either have come up
in the last couple of years, or existing old line companies who now realize that they cannot do business the old way, they need to change and improve. And yet the valuations are so undemanding, so undemanding. I mean, I have found companies which are trading in single-digit multiples with at least 12 months outlook of 20, 25, 30% earnings growth, maybe 2 years outlook of that much. And therefore, my buffet consists really of the scraps from the rich man's table. So the HDFC banks and the levers can belong to Prashant Jains of the world because they have the size of asset which obviously don't have personally. They have to buy those. Fortunately, I don't have to buy those. And you know, they have worked fantastically well in the last year, 2 years. The Sensex has delivered returns in line with the nominal GDP growth, and that means real plus inflation. So I think if you are expecting high inflation, reasonable inflation, I don't think the equity investor has to worry. It is on the other hand the bond investors who have to worry because bond prices could come off. So I don't think I would worry too much about that. But if I may go back to your earlier question and maybe give an alternate point of view. About praising media. No, about the retail flows. See, most of the participation by retail has been through F&O. Bulk of it. And yes, you can see it on the stock exchange volumes. And it is common knowledge that F&O by definition is a zero-sum game. It is actually a negative-sum game if you eliminate the transaction costs. And recently there was a very good study by ISB in tie-up with NSE, and it suggested that 95% of or thereabouts of direct trades have ended up losing money. So I think on the whole equities have done well, and especially money that came in the COVID lows. But I would not be so optimistic on the continued buoyancy of retail flows. Indirectly, I mean the SIPs will continue. SIPs I don't think we have to worry. और इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन ने कहा है कि मुश्किलों के बावजूद भारत तेजी से ग्रोथ दिखा रहा है. India is among the countries that are recovering the fastest from the pandemic, and all indicators are pointing upwards, with most sectors reporting equal, if not better, conditions than before. A recent IMF working paper indicates that India has rapidly pulled its people out of extreme poverty in the last decade. We have achieved all of this within 75 years of becoming a sovereign democracy. बिल्कुल, तो भारत काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और बाजार के दिग्गज भी बता रहे हैं यहाँ पर कि अपॉर्चुनिटीज़ सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर भी देखने को मिल रही हैं. ईटीना स्वदेश पर लगातार हम बोल रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलने वाला बाजार है, फिलहाल सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स को देखने का नहीं. रवि, मैं आना चाहूँगा आपके पास और बात करना चाहूँगा HCL टेक के नतीजों की जो अभी कुछ देर पहले आए हैं. मुनाफा यहाँ पर 3,400 करोड़ से बढ़कर 3,600 के आसपास पहुँच गया है. हमने देखा आय में भी बढ़त हुई है, 22,600 के आसपास तक पहुँच गई है. क्या आपको मौका लगा HCL टेक के नंबर्स देखने की? कैसे आपने एनालाइज किए और अब कैसे ट्रेड करना चाहिए कल स्टॉक में? बिल्कुल स्वामित जी, अभी तक अगर कंपैरिजन करें पूरे आईटी सेक्टर से तो इस समय HCL ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं और एज पर एक्सपेक्टेशन, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से अगर देखें तो पॉजिटिव है. आय भी बढ़ी है और यहाँ पर मार्जिन्स भी बढ़े हैं. और सबसे बड़ी बात है कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो एक एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं खरे उतरे हैं. तो नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो काफी अच्छे रहे हैं और इस समय जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है. जो इस समय स्टॉक 1100 के पास ट्रेड हो रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक में ज्यादातर करेक्शन मोड में रहा है, तो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लोअर लेवल पे यहाँ पर बाइंग करके चले. और अगर इस स्ट्रक्चर की ग्रोथ को देखते हैं, ईयरली ग्रोथ अगर कंपैरिजन करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अगर कंपैरिजन करें, तो आगे जो एक्सपेक्टेशन है उसमें 22 से 28% के बीच के रिटर्न आपको आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं. क्योंकि जो अभी तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में शुरुआत है, आगे के क्वार्टर्स को और पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे. तो ओवरऑल सेगमेंट में देखें तो लगभग 28% तक के रिटर्न 6 से 8 महीने में
कंस्ट्रक्टेड हैं, तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करते हैं, 15 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते के हिसाब से करते हैं, जो एसआईपी करते हैं, जो लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, उनके लिए एचसीएल यहाँ पर काफी अच्छा स्टॉक है और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में करंट भाव से शामिल कर सकते हैं। हर तरह के निवेशक के लिए और ट्रेडर के लिए एचसीएल टेक में मौका जरूर दिखाई देता है। चलिए वक्त हो गया है जानने का कि मेरे मेहमान कौन से आइडियाज लेकर आए हैं आपके लिए। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। देवांग, रिबाउंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर बाजार में। ऐसे में कल जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें कौन से स्टॉक्स पर बेट करना चाहेंगे आप? तो यहाँ पे ग्रासिम हमें लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा है, ग्रासिम काफी पॉजिटिव है। आफ्टर द करेक्शन एक सपोर्ट जोन से वापस हमें रिवर्सल देखने मिला है ग्रासिम में, तो ग्रासिम बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 1718 का, टारगेट है 1825। सेकेंड स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम एक सपोर्ट लिया हुआ है स्टॉक्स ने और वापस हमें एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर नाउ ये ट्रेड कर रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 4768 का, टारगेट है 5045। तो अपोलो और ग्रासिम ये दो स्टॉक हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। अपोलो में हमने देखा पिछले कुछ दिनों में अच्छी चाल भी देखने को मिली है। रवि, समय की थोड़ी कमी, इसलिए मैं आपसे एक स्टॉक जानना चाहूंगा जिस पर आप कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई एक सजेशन दें। कल किस पर बेट करेंगे आप? सौमित जी, 2 स्टॉक हैं, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं। पहला है अपोलो टायर, जिसपे आप कल बिड कर सकते हैं, और दूसरा आईटी सेक्टर्स है विप्रो। इन दोनों को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे अगर ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इंट्राडे में 1.5-2% का और लॉन्ग टर्म पे 18 से 20% का। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। विप्रो और अपोलो टायर्स ये दो स्टॉक जहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं और इसलिए आप इन पर कल और आने वाले समय के लिए ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल कॉल्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और देवांग समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। चलिए शो को समेटने का वक्त हो गया है, लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इजी नाउ स्वदेश पर।